Hello my friends, once again welcome you all in this brand new video. My name is Surya sir and today we'll discuss about IELTS 2022. We'll talk in detail about the IELTS. Okay guys, so watch this particular video till the end. We'll cover a lot more parameters such as eligibility criteria, paper pattern, cutoff, selection process, seat availability, fee structure and the top colleges who accept the IELTS score. Okay guys, so there is a big announcement. We have launched Maneuver Law Entrance, a law specific YouTube channel where you will find only law specific videos. Okay guys, with respect to all law entrance exams, you will find videos only on this particular channel. Okay, so guys, I provided link in the description. From 31st December 2021 onwards, all law entrance specific video will come on Maneuver Law Entrance channel only. Okay guys, so अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया guys, kindly go to the link, subscribe this particular channel क्योंकि आगे जो videos है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं. And on main channel you will find GK related videos, newspaper analysis videos and lot more things. Okay guys, so in case अगर आपको preparation करना है for any law entrance exams or even for IELTS, guys, we already launched the batches, so you can interact live with us. You will receive books at your doorstep. You will learn various shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic tests, mock test, WhatsApp group where you can share your doubts. And throughout this period, you will solve around 10,000 plus questions and you will get the mentorship and where you will get lot more motivations and the guidance to boost your preparation. Okay guys, so you can prepare with us for MH Law CET 3 years and 5 years, DO LLB, BHU Law, SLAT, CLAT, LSAT, IELTS and various other entrance exams are there. So call our board line number 8828581455 or you can visit our website manual2.com/law-entrance. So let's start first discussing with IELTS. So what exactly it means? IELTS All India Law Entrance Test. Okay, IELTS is conducted once every year by the National Law University, Delhi. Okay guys, so we already discussed in our CLAT video. CLAT, it is accepted by 22 NLUs and different private universities are there who accepts CLAT score, and the National Law University Delhi conducts its own exam known as IELTS. And not only NLU Delhi but lot more institutes are there and even the universities who accept IELTS scores. Okay, we'll talk later about that. And it is for admission to the 5-year full-time undergraduate degree course in legal studies, that is nothing but the Bachelor of Arts plus Bachelor of Legislative Law, and that is your BLLB course. So how many seats are there in NLU Delhi? Only 123 seats. And look at the competition guys, more than 25,000 plus aspirants appear for the IELTS exam. And IELTS exam is not for undergraduate program, it is also for the LLM, the master program and the doctoral programs offered by the NLU Delhi. Now what exactly eligibility criteria says? It says qualification, candidate should be passed 10+2 or equivalent exam with minimum 45% marks for general or OBC category candidate and 40% marks for SC, ST and PWD category candidate. Now if you are a foreign national candidate, then you should score around 65% at the 10+2 level. Okay guys, now candidates who are appearing in the qualifying examination, that means if you are in 12th, you are also eligible. And age criteria says there is no age bar. Now let's talk about the paper pattern. So 150 questions you will get and time duration is very less, only 90 minutes. Okay, 1 hour and 30 minutes you will get to solve around 150 questions. Okay guys, exam mode, that is completely online, computer based exam is there. Registration process start hota hai in the last week of December. Okay, and for 2022 the registration process will be start from the January first week. Okay guys, first week onwards you will get all the notifications registration process को कितना time लगने वाला है. Admit card जो out होगा that will be in the second week of April and exam date that is nothing but the first week of May. So 1st of May is your exam date. एग्जाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, अलग से एक वीडियो बना रखी है गाइस. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज सेक्शंस. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सेम एज दैट ऑफ योर क्लैट एग्जाम. ओके गाइस, डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्लैट में एक सर्टन रेशियो है 35 to 39 क्वेश्चंस, 28 to 32 क्वेश्चंस, एंड हियर यू विल फाइंड 35 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन एक्सेप्ट एलिमेंट्री एंड मैथमेटिक्स. Okay, so elementary mathematics 10 questions and rest all section 35 questions from each. Okay, so overall 150 questions are there and marking system says you will get +1 mark for each correct answer and you will lose 0.25 marks for your incorrect answer. Okay guys, so बहुत ध्यान से preparation करना है and we don't wanna
lose our marks and we have to score maximum marks so that we can enter into the NLU Delhi और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको BLLB का प्रोग्राम ऑफर करती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ. गाइस, जनरल कैटेगरी को लेकर कट ऑफ हमेशा हाई होता है एंड दैट विल बी 90 to 110 प्लस. This is expected cutoff for 2022. Okay guys, EWS 85 to 90 plus, OBC कैटेगरी को लेकर 80 to 88, SC 67 to 75 plus, ST कैटेगरी 58 to 65, PWD candidate. Now PWD with respect to all the different categories, अगर PWD candidate with respect to SC ST हो so 50 to 65 plus का marks होगा तो he can get seat in NLU Delhi. एंड PWD कैंडिडेट अगर OBC को लेकर होगा he needs around 65 plus mark, and PWD कैटेगरी with respect to general then he need around 72 plus mark. Okay guys, now कश्मीरी माइग्रेंट को लेकर कट ऑफ कुछ कम है 65 to 75 plus, and resident of Jammu and Kashmir 80 to 90 plus. Okay, so these are all the respective cut off. Now guys, out of 150, this is the question mark. Now here you have to put your marks. Now guys, कितना मार्क्स आप स्कोर करते हो दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. पेपर पैटर्न आपके सामने है, बस इन सेक्शंस पे आपको काम करना है, दैट्स इट. ओके, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, डेफिनेटली गाइज आईलेट के लिए भी आपको ट्राई करना है बिकॉज पेपर पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो कट ऑफ आपके सामने है, ऑल डिटेल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ ग्रैब ऑल दिस डिटेल्स एंड देन कुछ नहीं गाइज, बस एडमिशन लेना है. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस सेज कॉमन एडमिशन प्रोसीजर फॉलो होता है गाइज विच इज नोन एज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस. ओके, एंड दैट इज नथिंग बट काउंसलिंग प्रोसेस भी उसे कहते हैं. फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड: रजिस्टर ऑनलाइन, देन यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देन सीट अलॉटमेंट एज पर द मेरिट. ओके, सो NLU दिल्ली की हो या फिर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हो जिसके लिए आप अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हो, उनके मेरिट के हिसाब से आपको सीट मिलने वाली है. देन यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस विच विल बी 50,000 इन केस ऑफ NLU दिल्ली. ओके, और रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की अलग अलग फीस होगी. एंड देन यू हैव टू विजिट पर्टिकुलर कॉलेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. ओके, नाउ NLU दिल्ली को लेकर अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, ओके, सो फी स्ट्रक्चर इज अराउंड 1,32,500. ओके, and 74,500 other. So overall it is approx 2 lakh rupees per annum. Okay guys, so per annum की आपकी जो फीस होने वाली है that will be 2 lakh rupees. So 5 years अराउंड 10 लाख तो फी स्ट्रक्चर होने वाली है. नाउ यू विल बी टॉकिंग अबाउट कि यार फी स्ट्रक्चर बहुत हाई है. डोंट वरी गाइज, इफ़ यू आर इन NLU दिल्ली और द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स you will get around 15 to 18 lakh per annum का पैकेज. एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ दैन गाइस दैट विल बी गो बियॉन्ड ऑल दिस नंबर. ओके, 15 to 18 नहीं, you will get around 25 plus. Okay, so during selection criteria, counseling fee you have to pay around 50,000 and rest जो बैलेंस फीस होती है 82,500 रुपीज़ वो आप लेटर पे कर सकते हो. ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर. Now we'll talk about this seat intake. Okay guys, so NLU Delhi, okay, वहाँ आपको सीट मिलने वाली है ओवरऑल 123 as I said. Okay, and competition क्या कहता है guys, more than 25,000. अब guys किस किस को सीट मिलने वाली है? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला है. Now if you belong to the respective category, उनके respective seat matrix यहाँ mention किया गया guys. Unreserved, that means general category, total 50 seats are there. Horizontal reservation for PWD candidate 3, and seat under respective categories after excluding PWD 47. Okay, so respective जो total है वो यहाँ है. OBC category 22% reservation is there, 24 seats are there. Scheduled caste 15%, 17 seat मिलेगी. Scheduled tribe 7.5%, 8 seats are there. Economical weaker section 10% reservation is there, 11 seats मिलने वाली है. सब total 110. Now supernumerary seats: Kashmiri migrant 1, residents of Jammu and Kashmir 2, foreign nationals 5 seats, and OCI PIO के लिए 10 सीट्स आते हैं. ओके, नाउ यू हैव 123 सीट्स. अगर आप फॉरेन नेशनल्स हो आपको आईलेट देने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट. एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स वो आर द इंडियन ओरिजिन, दे हैव टू गिव द आईलेट एंट्रेंस एग्जाम. ओके गाइज, नाउ रिस्पेक्टिव सीट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत कम है. और जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके पास सीट कितनी है गाइज? ओनली 60 सीट्स. सम कॉलेजेस हैज़ 60 to 80 सीट्स. ओके,
सो सीट इनटेक बहुत कम है बट कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है गाइस. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आईलेट के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये सारी टॉप कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो गाइस. ओके, सो आपको चाहिए सीट इन ऑल दिस रिस्पेक्टिव कॉलेजेस. एनएलयू दिल्ली, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे, सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, जेवियर लॉ स्कूल भुवनेश्वर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी झाझर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. Okay guys, faculty of law SRM University Sonipat, ISME Law College Bangalore and the Ansal University Gurgaon. These are some of the top colleges guys. इनको आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ आपको सबसे बेस्ट पैकेजेस मिलने वाला. और भी बहुत सारे कॉलेजेस है guys. And now to get more and more updates with respect to the legal programs, legal studies and the law entrance exams, guys, kindly subscribe our YouTube channel. Okay, so if you got all the details, kindly like the video and do share to all of your friends. Okay, and if you want a preparation for 2022 and 23 guys, you can interact live with us or you can join our classroom coaching at Mumbai. So you can call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dadar. For all exam updates and notifications, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. Okay guys, so all link I mentioned in the description. Kindly check all those links and don't forget to subscribe our new YouTube channel Manua Law Entrance. One counseling form link I mentioned in the description. Kindly fill that form and our team will get back to you. So any doubts guys, feel free to ask me in the comment section. We'll try to answer all of your queries. So that's all from today's video guys. All the best for your preparation. See you in the next video.